Hello Sunbeamers, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start the second part of your chapter matter, and today we are going to read about Brownian motion. See, the name Brownian motion is given because it was discovered by a scientist known as Robert Brown. The name of the scientist was Robert Brown. Okay, the name of the scientist who discovered Brownian motion was Robert Brown. In which year he discovered it? In 1827. Okay. He was an English botanist and he studied the pollen grains suspended in a liquid. What he studied? Pollen grains. Pollen grains are the male gametophyte or the male pollen grains are found in the male flower. Okay, they are the male gametophytes. Pollen grains, gametophyte means the parts from which gametes comes. Okay, from pollen grains only the male gametes comes. So they are the male gametophyte. Pollen grain suspended in a liquid. Suspended in a liquid, and he was able to observe the Brownian movement. What is the Brownian movement? It is the haphazard or the random movement. What is Brownian movement? Brownian movement means haphazard. Let me type these all things. Okay. What is Brownian movement? Brownian movement, haphazard or random movement. What is Brownian movement? Haphazard or random movement observed when small colloidal particles are suspended in a liquid. Colloidal particles suspended in a liquid. Colloidal particles, okay, colloidal particles means the particle, means how I will explain you colloidal. What is there are three kinds of particles. What is solution, colloid, and suspension. So colloidal particles are very small particles which are not totally soluble in the liquid. They remain suspended in the liquid. Okay, they are known as colloidal particles. Suppose you see your milk. Milk is also a colloid. Okay, so when this colloidal particles are suspended in a liquid, you can observe the haphazard movement there. Okay, you can observe haphazard movement or random movement. इधर उधर ऐसे ही move. ये picture में देखो. This is the liquid. This red color are the colloidal particles. Okay, see how it is moving here, there, here, there, here, there. So this is the random movement. Okay, or rapid movement. It is showing. Okay, what you will let an exam? It is a haphazard or random movement. Okay, and it is rapid in nature. बहुत जल्दी होता है. Okay, there are some properties of these colloidal particles. What are the properties of the colloidal particles? Sorry, of the Brownian motion. Brownian motion decreases with increase in size of particle. सी अगर पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा तो मोशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा होगा तो धीरे धीरे मूव करेगा वो. तो ज्यादा मोटा होता है वो धीरे दौड़ता है ना, ज्यादा पतला होता है वो जोर से दौड़ता है. So if Brownian motion decreases with the increase in size of the particles, also Brownian motion decreases with increase in density, decreases
decreases with increase in density. Density of the medium, जो medium में वो liquid या medium, देखो जिस medium में वो motion कर रहा है, suppose इसको हम ज्यादा denser कर देंगे, so क्या होगा? If we will increase the density, density means number of mass per unit volume. ज्यादा density कर देंगे तो ज्यादा molecule हो जाएगा. If more molecules will be there, the movement of this particle will be less. अगर यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल आ गया तो इसका मूवमेंट को बंद कर देगा. अगर सपोज आप यू विल गो इन अ यू विल यू आर राइडिंग योर बाइसाइकिल इन अ रोड विच इज नॉट मच क्राउडेड. ओके, नॉट मच क्राउडेड, शांत है रोड, vehicles are not moving, you can ride your bicycle very easily. But if you are moving a bicycle in a road which is much crowded, much traffic is there, so you will ride it very slowly. You will stop somewhere and you will stop somewhere, you will wait for getting the traffic cleared. Okay, so like that only, अगर particles ज्यादा होंगे medium के, तो ब्राउनियन मोशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड में जो पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, इट विल मूव वेरी लेस. But if it is less density means less number of particles are there, then Brownian motion is more, it increases. So with increase in density, your Brownian motion decreases. Okay, next is temperature. Brownian motion decreases with decrease in temperature. टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे, अगर आप हीट से कोल्ड को ला दोगे, तो आपका ब्राउनियन मोशन डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज सी इन योर नॉर्मल सब्सटेंस, कोई मटेरियल में यू एड टेम्परेचर और यू विल हीट इट, वाइब्रेशन इंक्रीजेस. एनी सब्सटेंस, योर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इफ यू विल हीट इट, वाइब्रेशन इंक्रीजेस. ओके, बट इफ यू विल कोल्ड इट, वाइब्रेशन डिक्रीजेस, फ्रीज हो जाएगा वाइब्रेशन. इसीलिए ब्राउनियन मोशन भी एक मोशन है, तो इट इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, it is a kind of motion. So if you will decrease temperature, motion decreases. If you will increase temperature, motion increases. These three things you have to remember. Now I want to show you the animation for Brownian motion. Okay, this one is the animation for your Brownian motion. See, here this is the medium. The blue color one is the medium, the particles of the medium or the particles of the liquid. This one, this blue color one is the particles of the liquid or the medium, in which medium the particle, another particle or the colloidal particle is suspended, and this one is the suspended particle. See how it is moving. Suppose what I will do now, I will just decrease the temperature. See, I have decreased the temperature. Temperature decrease कर दिया, मैं उसको cold में कर दिया. I have decreased the temperature. I have brought it to cold temperature. So see, the movement decreases. I will reset it again. See, the movement decreases. How it is moving very slowly. And see, the movement is haphazardly. It is moving randomly, not in straight line. It is moving randomly. So see, and now I will slowly try to increase the temperature. I am increasing the temperature. Increasing it. See, the movement also increases. Full temperature, hot कर दिया पूरा इसको. Increasing the temp, I have given full temperature. How the movement is showing? Fast movement. Brownian motion increases. Okay, so this is the Brownian motion. Okay. Now, my dear students, we will read about changes of state of matter. Okay. So, see, suppose you take example of water. Water is in its normal state, it is liquid in nature. But when you freeze it, you keep it in freeze. Your water, you keep it in freeze, it will change into ice. Ice is solid. And if the same ice, you will take in a container and heat it, you will find it will change into water. And you heat it for a longer time, all the water will evaporate into water vapor, in the form of water vapor. So matter always doesn't remain in a one state. It changes its state from time to time. Okay, on the basis of the various factors you give to it. Various factors. What are the factors? Temperature and pressure.
Okay, if you give temperature, or if you decrease or increase the temperature, or if you apply pressure or decrease the pressure, you can change the state of matter. Matter में अगर हम लोग एक matter है, अगर उसको temperature देते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, pressure कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो हम उसका state को बदल सकते हैं. We can change the state of matter. So the first factor is temperature. Temperature is the first factor by which you can change the state of matter. Okay. Suppose you take a solid. Two things you have to remember here. One is the melting point and one is the boiling point. What is melting point? Suppose you are taking a solid, let it be ice. And you were converting it into water. There will be a specific temperature at which ice starts melting. Let it be 4 degrees Celsius. Okay, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आइस मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज योर 4 डिग्री सेल्सियस में बेसिकली 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस ice starts melting into water. So this is known as your melting point. Melting means solid converted into a liquid. Here ice is converting into a liquid. So this solid is converting into a liquid. Ice is converting into water. So this temperature at which solid is converting into liquid, it is called its melting point. Here definition is the temperature at which solid converts into liquid. Okay, temperature at which solid converts into liquid is called as melting point. What is boiling point? Boiling means something to boil, means we heat a liquid. Apply temperature to a liquid. Liquid को हम लोग क्या करेंगे? Heat करेंगे, boil करेंगे water को, उसमें क्या देंगे? Temperature देंगे. So boiling point, the temperature at which liquid turns into gas. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो वो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा. इट विल इवेपोरेट इनटू वाटर वेपर. ओके, so these two things you have to remember: boiling point, melting point. See here, this is very important, this one. Suppose first you will take from solid. See, solid से melting temperature increase करेंगे. We will increase the temperature. Okay, फर्स्ट टेम्परेचर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेशर पर्सपेक्टिव से देखेंगे. फर्स्ट वी लुक द थिंग एट टेम्परेचर पर्सपेक्टिव. मेल्टिंग, we will convert it into liquid, means you have to increase the temperature देना पड़ेगा. So it will convert into liquid. The process is called melting. Process is called melting. Liquid to gas. Liquid to gas. Liquid to gas. Again, you have to increase temperature. Evaporation. The process is called evaporation. Evaporate. पढ़े होगे तुम लोग. Evaporation से हमारा जो clouds बनता है. The clouds are made by evaporation. Water vapor. Water evaporates into water vapor. Now, solid is converted into gas by the process sublimation. Solid to gas by the process sublimation. Solid to gas sublimation. Okay, now गैस से लिक्विड बनेगा. रेन वाला जो सीन है, टेम्परेचर डिक्रीज होके रेन. कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड, प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा. जैसे ही विंटर सीजन आएगा, टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा. 0 डिग्री क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट. 0 डिग्री टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट. 0 डिग्री में आइस, वाटर आइस बन जाएगा. द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड.
फ्रीजिंग, गैस टू सॉलिड भी बन जाता है। ओके, ऑल्सो कूल करने से गैस भी, वाटर वेपर्स भी सॉलिड बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड योर, जैसे स्नोफॉल होता है ना, यू सी स्नोफॉल, स्नोफॉल कहाँ से, आसमान से होता है ना, पानी से तो नहीं बनता। हाँ, सम रिवर्स आर देयर विच कन्वर्ट, which gets converted into ice, but in snowfall basically from your air only, atmosphere only, snow drops. So at that very low temperature what happens, your gas, water vapors convert into ice, and that process is called deposition. The process is called deposition. So इसको याद रखना है, see, very very important. First you will make here gas, here solid, like this liquid. Okay, solid to liquid, the process is called as solid to liquid melting. Solid to liquid, it is melting. Okay, now liquid to gas, evaporation. I'm only writing here evaporation. Okay, and next gas to solid, sorry, solid to gas. Solid to gas is sublimation. Solid to gas is sublimation. Okay, sublimation. This is called your trio cycle. Trio cycle. Okay, I've given it a name as trio cycle. One more we will make. Same, gas, liquid, solid. Gas to liquid. Gas to liquid. Condensation. I'm writing only con. Okay. Liquid to solid. Freezing. Freezing. Okay. Liquid to solid is your freezing. And gas to solid, deposition. Okay. Deposition. Gas to solid, deposition. Fine. This one you have to remember. So deposition occurs at very, very low temperature. Okay, in which vapors changes into solid, and sometimes at high temperature solid changes into gas, which is known as sublimation. अभी प्रेशर का क्या खेल है देखते हैं, टेम्परेचर समझ गए. Now let's understand the changes of state of matter in perspective of pressure. So when pressure is reduced, pressure कम कर दिए, pressure is reduced, pressure is reduced, then boiling point also decreases. If pressure is reduced, boiling point decreases, boiling point decreases, and liquid easily converts to gas. इजीली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा, मतलब हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इजीली लिक्विड क्या हो जाता है, गैस को कन्वर्ट हो जाता है. ऑल्सो इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन प्रेशर, what will it happen, increase in pressure. If pressure will increase, then melting point decreases, melting point decreases, melting point decrease हो जाएगा, और solid एंड सॉलिड, अगर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए, थोड़ा सोचो, मेल्टिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेशर. मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टेम्परेचर हियर. टेम्परेचर में क्या होता है, प्रेशर का पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट तो याद रखना है, प्रेशर रिड्यूस होने से बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, और प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. सॉलिड का मेल्टिंग, सॉरी,
हाँ, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का। अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. Okay, what is the perspective of the kinetic molecular theory? The last part of the chapter we will do. Kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory. What is this kinetic molecular theory? So, if you are applying some heat apply करेंगे. If you are applying some heat, okay, or increasing the amount of heat, that will increase the kinetic energy. What is kinetic energy? Energy, motion. Motion का energy जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Kinetic energy. So अगर kinetic energy increase किया, if you will increase kinetic energy means you will increase the energy of the motion, वो किस में convert हो जाएगा? It will convert to heat. सपोज आप एक चीज को एनर्जी दे रहे हो और वो एनर्जी उसका मोशन ज्यादा हो रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा. ओके, इट विल प्रोड्यूस हीट. हीट प्रोड्यूस करेगा. यस, फॉर एन एग्जांपल, इफ ए सॉलिड इज हीटेड, सपोज ए सॉलिड इज हीटेड, ओके, सॉलिड हीट हो रहा है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस. हीट इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ. तो आप एक सॉलिड लिए, यू टूक आयरन एंड बिगैन टू हीट इट. हीट अप्लाई किए उसको, हीट. then what will increase? You will increase its kinetic energy. एनर्जी बढ़ाओगे उसका. एनर्जी कैसे बढ़ेगा सर? आप कैसे बोल रहे हो एनर्जी बढ़ेगा? आई हैव इन द प्रीवियस क्लास आई हैव shown you a vibration video animation. You have seen the molecules are vibrating. Now only I have told you in Brownian motion, if you will apply heat, vibration increases. So वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि बेसिकली जो है योर सॉलिड्स कैनॉट वाइब्रेट टू अदर पोजीशन, सो दे कैन वाइब्रेट इन ओनली मीन पोजीशन. ओरिजिनल पोजीशन में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा. द वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इंक्रीजेस विगरसली. विगरसली मीन स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन ज्यादा होगा. अगर स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन ज्यादा होगा, अगर मोशन ज्यादा होगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ऑफ मोशन. एनर्जी ऑफ मोशन बढ़ेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? if energy of motion increases, then what kinetic energy will increase or decrease? Increase. If your motion will increase, energy will increase. If energy will increase, energy of motion will increase, and kinetic energy will also increase. Then if your kinetic energy increases, it will produce heat. देखो पहले क्या हुआ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. आप लोग क्या दिए? पहले हीट दिए, यू गेव हीट. ओके, हीट से क्या बढ़ा? वाइब्रेशन बढ़ा. वाइब्रेशन इंक्रीज. वाइब्रेशन से क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? मैं बोला था हीट में. हीट इंक्रीज. हीट इंक्रीज में टेम्परेचर इंक्रीज. तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा हीट बढ़ने से? लिक्विड. दिस इज योर फंडा. ओके, ओके. तो हीट इंक्रीज, हीट दिए, वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, वाइब्रेशन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी से हीट बढ़ा, फिर से टेम्परेचर बढ़ा. सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया.
सपोज हम फर्दर हीट अप्लाई किए, और भी ज्यादा हीट अप्लाई किए, मोर हीट, देन एटम और मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। ओके, सो क्या होगा, अगर हम, अभी लिक्विड बन गया है, आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड बन गया है, आइस जो है वो क्या बन गया है, वाटर बन गया है, और वाटर में और भी हीट दे रहे हैं, और भी हीट, ज्यादा हीट वाटर में भी क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं, वाटर में भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अगर वाटर में भी वाइब्रेशन बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ने से क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अंडरस्टूड, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। सपोज हम उसका उल्टा लेंगे, अगर हम हीट को डिक्रीज कर देंगे, मतलब कूल कर देंगे, हम उसको कूल कूल कर देंगे, कूल करने से क्या होता है, वाइब्रेशन डिक्रीज हो जाता है, वाइब्रेशन डिक्रीज, के डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज। कूल करने से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड। ओके, सेम थिंग गैस में वही होता है, गैस में अगर आप गैस को कूल करोगे, रेन में कैसा होता है, टेम्परेचर कम जाता है, टेम्परेचर कमने से वाइब्रेशन या मोशन डिक्रीज हो जाता है, मोशन डिक्रीज होने से क्या डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड। ओके, so this was all about the chapter matter. The next class of chemistry we are going to learn about physical and chemical changes. Till then, thank you, bye bye, and take care. And don't forget to subscribe. Sunbeams Education is providing you value, quality education in free of cost.